All right, everybody. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I'm going to start mensuration recent exam cases, and the exam cases from 2023, May, June, October, November, and February, March 2024 of IGCSE. First of all, beta, I have solved this question already in my previous video as well. So that is the reason I'm skipping this question number one, the question 4A in this worksheet. So I'm just proceeding to next question, which is right in front of you. And this question is from 058041 October, November 2023. Now, beta, while solving this question, I can see that the examiner has only given me the formula of sphere with the volume V is equals to 4 by 3 pi r cube. Only this formula is given to me in question. First of all, as I'm practicing for the exam, as I'm thinking as a student, so but I can see that I have four shapes here. So I will make my formula sheet for this question first. So I will make a formula sheet here for this question only. Right, everybody? Yes or no? Yes or no? जी सर. Yes, sir. Let's make a formula sheet here. First of all, beta, I can see that the top is hemisphere. So I will write here hemisphere. Volume of the hemisphere is the volume of sphere divided by 2. And volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube whole divided by 2. That would be the volume of the hemisphere. Total surface area. Total surface area of a hemisphere is equals to curved plus base. Curved is 2 pi r square plus base is a circle, so that is pi r square. So this is the formula for from the hemisphere. Got it? Okay. The second one is a second shape is cylinder. Okay. Let's see what formulas we have for the cylinder. Beta, the volume of a cylinder, it is pi r square h, and total surface area of the cylinder is curved plus base. Cylinder has the curved part 2 pi r h, and the base is 2 pi r square. Top and bottom is circle. That's for the cylinder. Okay. The third shape is also hemisphere. So we have the hemisphere already, which is above. You can see that already. So it means that there are two shapes. Shape number one is hemisphere. Shape number two is cylinder. That's my formula sheet for this particular question. Okay. So in the next question, I won't be solving any part for hemisphere and a cylinder. Okay. Please pay attention. The diagram shows a solid form by joining two hemispheres and a cylinder. Okay, one hemisphere is at the top and one hemisphere is at the bottom. And there is a cylinder in between. The radius of the large hemisphere is 5.4. Okay, the radius of the large hemisphere means that this point to this point is 5.4. You can see that very clearly here. Yes or no, bacha? Yes or no? जी सर. Okay. 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 Now they say that but the radius of the large hemisphere is 5.4 centimeter. The radius of the small hemisphere and the radius of the cylinder, they both are 3.6. The height of the cylinder is 6.5. Show that at the volume of solid correct to the nearest cubic centimeter is equal to this thing. So better we have three volumes here. V1, V2, V3. Got it? Yes or no? Volume जी of a सर. hemi, volume of a cylinder, and volume of a hemi again. So I can say that hemi large. Okay, look at the hemisphere small one. So according to this, the formula is sphere divided by 2. Sphere formula is given in the question. It is 4 by 3 pi r cube whole divided by 2. So volume of the small hemisphere would be 4 by 3 pi. R radius of the small is 3.6 square whole divided by 2. So I will find out the volume first and then I will divide the answer 4 divided by fraction 4
divided by 3 bracket pi r is 3.6 whole square, and the answer divided by 2. So the answer is 216 divided by 25 pi. 216 divided सर by 25 pi. G. सर आपने वो आर के साथ स्क्वायर लिया लेकिन सर फॉर्मूले में क्यूब है। Okay, मेरी गलती है फिर. Let me check. Thank you so much, Mutashim. 4 by 3. Shift and pi. 3.6. Okay, वो मैंने shift शायद press नहीं हुआ. अभी भी square आया. Shift and square, so that's cube. Divided by 2. So the answer is 97.7. So the answer is 97 point. Answer is 97.7. 97.7. Okay. Let me write here 7 2. 2 dp ले लेते हैं. Volume of a cylinder. Volume of a cylinder is equals to pi r square h. Write the formulas and then write the values. Okay. Just because of the practice, you won't struggle in. You will not struggle in exam. Okay. Multiply by height of the cylinder is 6.5. So the answer would be shift pi bracket 3.6 square, and the height of the cylinder is 6.5. So the answer is this much. Let's press SND. So that would be 264.65. Okay, 2 dp's only. Okay, volume of a hemi large. Okay, so the formula would be 4 by 3 pi r cube. Large hemisphere has the radius of 5.4 and whole divided by 2. So let's check. 4 by 3 shift and pi bracket 5.4 bracket, and the answer with a cube. So that would be 4 by 3 pi r cube. Answer divided by 2, because it's a hemisphere, it is 329.79. Okay, let's add all. So total would be add all. So let's see what is the answer here. So 97.72 plus 264.65 plus 329.79. So the answer is 692.12. So 692.12. So 692 centimeter cube shown. That is the result for 4 marks. This is the capacity of this solid, and volume is all about the capacity. I hope all of you understood this. Any problems so far? बेटा मैं इसीलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आराम से एक क्वेश्चन समझ आए लेकिन सही आए. Okay, now they say that a mathematically similar solid is made up of silver, and in this solid the cylinder has a radius of 0.6, and 1 centimeter cube of silver has a mass of 10.49 grams. Calculate the total mass of the silver solid. But first of all, we need the volume of this similar solid. So for example, you know this, there is a solid in front of you, and they say that there is a mathematically similar solid, something like that. I'm just making it just for the sake of better understanding. Okay. And they are saying that this similar solid is made up of silver. In this solid, the cylinder has a radius 0.6. The radius of the cylinder is 0.6, and they say that 1 centimeter cube of silver means that volume, that is a volume, that volume of this silver has a mass of 10.49 grams. So first of all, we need to find out the volume of the similar solid. So this is my L1, because I'm finding V1 here, and this is my L2, and the volume 2 is already 692. So let's find it with the help of the ratio analysis, which is in the similarity. So V1 divided by V2 is equals to L1 divided by L2 whole cube. So V1 is unknown. V2 would be 692. L1 of the first, which is 0.6. L2 would be 3.6 with a cube. So automatically 692 will come here. So V1 is equals to 0.6 divided by 3.6 whole cube multiply by 692. So the answer would be bracket fraction 0.6, denominator is 3.6
3.6 bracket close and with the power 3, okay, multiply by 692. So the answer is 3.203. They say that the answer for this one is that the volume is 3.20 centimeter cube. Okay, that is the volume. G, any problem, anyone? Any problem, anyone? Now, No, beta, sir. they are saying that 1 centimeter cube, it has 10.49 grams of what? Of silver. So 3.20 multiplied by 10.49 gram. So let's check what is the total mass of the silver solid. Multiply by 10.49, 10.49. So the answer is 33.606. That is the mass. So let's check till three significant figure. First significant, second, third. So 33.6 grams. G, any problem, anyone? Any problem, anyone? सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने वॉल्यूम निकालना है? बेटा वो आपको ये क्या कहा है उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होता है, एरिया तो नहीं होता ना। अंडरस्टूड? यस सर। इसीलिए हमें पता लगा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही वॉल्यूम है। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो मैं एरिया निकालता। Proceeding. The part B of this question 058041 October November 2023. They say that beta it's a sector. Okay, we can see that we have a sector. Okay. So in sector beta, this is for my formula sheet. I have two formulas in sector. First formula is of the arc length. Okay, what is the arc length? Arc length is this thing beta. Arc length is a pizza slice and this boundary is called arc length, which is known as theta divided by 360 times 2 pi r. And the second formula in the arc length is area of the sector, which is theta divided by 360 times pi r square. And we know this very well that the arc length is the net of cone. So cone can be made. Cone can be made by folding sector. बेटा एक बच्चा बता सकता है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 22. Okay. Look at this sector, beta. AOB is a sector. We can see that with center O. AO is 10 and the sector angle is 216. If AO is 10, so Hamad, this is understood that this is also 10 because it's the radius of the circle. Calculate the length of this sector. Beta, length of this sector, this is the length of the sector, the blue part. I'm sharing it just for the sake of better understanding. And length of this sector, length of the arc of this sector means arc length formula and give your answer in terms of pi. So we will not press the SND button. So arc length would be theta divided by 360. So 216 divided by 360 times 2 pi and the radius is 10. So we will just use the calculator and whatever answer is, we will just write it here. 12 So pi. it's 12 pi. जी So we will not press the SND button. We will write it here that 12 pi is the arc length and I will write here 12 pi as well. A cone is made from the sector by joining O to A and O to B. If we connect O to A and O to B, we will get a cone. Like for example, this thing. Please pay attention, everybody. It's a now it's a cone. Yes or no? Understood, bacha? And we know that this blue part of the sector is now the circumference of the circle. Do you agree with me or not? Yes or no? Please try जी to सर जी। understand that this blue part of arc length is now the circumference of the circle. So I can find out the radius of the cone. So radius of the cone is equals to circumference of cone. It is equals to arc length of sector. Arc length of sector. Yes or no, bacha?
सर लेकिन जो हमारी ये जो हमारा 12 पाई वाली जगह आई है, इस पे हम्म ये सारा सरकमफ्रेंस तो नहीं हो सकता। बेटा ये जो कोन के नीचे जो सर्कल बनेगा वही होगा। आप एक पेपर पे काट लो सेक्टर, तो जब आप उसका ए और बी को ज्वाइन करोगे तो वो जो आर्क लेंथ होगा वही नीचे सर्कल बना देगा कोन का। समझ आइए। जी सर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन इज 12 पाई और आर्क लेंथ of the sector is also 12 pi. So circumference of the circle, the formula is 2 pi r, and this is 12 pi. We just found it in part A. So I can cancel pi pi. So 2r is equals to 12 means r is equals to 6 centimeter. Understood everybody? Now calculate the volume of the cone. Beta, we know that the volume of the cone is 1/3 of circle pi r square and multiply by height, and the formula is fortunately given in the paper as well. Now I have the radius already, 1 by 3 pi, radius is 6 square, but the height is not given. So I have to find out the height as well. Now we need to understand the situation that A to O and O to B is 10 centimeter. O to A and O to B is 10 centimeter. This A to O or and O to B is what? Just tell me one thing. Slant height. This is what? Slant height. So, beta, can I say that this point is called what? This point is my radius. I don't know what happened with my iPad today. This is my radius. This is my perpendicular. This is what? My perpendicular. So that would be the height. Beta, they joined A and B. Okay. If they joined A and B, so AB is point right in front of you. So can I say that this would be OAB? Yes or no? Yes or no? We need to find out जी सर जी that सर the सर height of the cone. Ji beta. वो टॉप पर नहीं होगा कॉर्नर में Oh yes, sorry. पॉइंट जो बन रहा है Sorry, apologies. This is the point. This is the point O. Beta, O to A is 10 and O to B is also 10. I can say that this is 10. Let's find out the height by using Pythagoras. That is the reason I told you that Pythagoras theorem is very much important. If this is 6, this is 10. I know the answer is 8. Why? Because I know the Pythagoras theorem. So height, so 10 square is equals to 6 square plus h square. 10 square minus 6 square where the square root is equals to h. So h is equals to 8 centimeter is the height. Yes or no? You can check your calculator as well. So that would be the height. So now press the functions here. 1 by 3. That will be shift and pi bracket. 6 square is 36. I'm writing 36 multiply by 8. So the answer is 96 pi. So I'm gonna press S and D because the answer is in centimeter cube, not in pi. 301.59. So 301.59. Now it's time to check third significant figure. This is my third significant figure. After 1, it's 5. So I will add 1 to it. So 302 would be the answer. Understood, सर everybody? जी बेटा. सर वो वहाँ ऊपर पॉइंट पे कैसे shouldn't it be at the red dot वाली जगह? नहीं नहीं नहीं, रेड डॉट वाली जगह पे बेटा, ये रेड डॉट जो है ना, ये कोन के नीचे जो सर्कल बना है ये उसका ओ है। समझ आइए? जी समझ आइए बेटा, जी ये जो कोन देखो, अभी थोड़ा सा समझ डालने, थोड़ा सा ये हमने कोन का पोस्टमार्टम किया हुआ है ऊपर। ये आपको रेडियस नजर आ रहा है जी बेटा? ये रेडियस और ये रेडियस जब ये ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो ऊपर आर्क लेंथ होगा ये कोन का सर्कल बना देगा। समझ आइए? जी तो हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी दैट द नेट ऑफ कोन इज द सेक्टर। समझ आई? इसका जी मतलब है कि O टू A जो है ना ये 10 है। ये कितनी है? ये 10 10 है। ये स्लांट लेंथ ऑफ द कोन है। हाइट ऑफ द कोन हमने फाइंड आउट किया है। रेडियस हम लोग पहले निकाल चुके थे क्योंकि हमें ये पता है कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन। समझ आइए? ठीक है सो आर की वैल्यू आ चुकी थी, फिर हमारे पास ये 10 भी था। हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के जरिए हमने एच की वैल्यू बाहर निकाली क्योंकि एच यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाला और उसी एच को हम लोगों ने वॉल्यूम के अंदर पुट कर दिया, तो वी गॉट द आंसर।
Any ठीक है। problem? Anyone else? Okay. Now look at the question, beta. We have a pyramid. Okay. And pyramid ke liye we have a formula sheet here. So let's make a formula sheet for pyramid first. Formula sheet. तो दो formulas हैं, एक volume. Volume of the pyramid is equals to what? Anyone? 1 by 3 times base area. क्या हो गया यार? Sorry, sir. Base area times height of pyramid. That is the formula of the volume formula of the pyramid. And the total surface area is area of all faces. Area of all faces. Okay. Now बेटा एक टाइम पे एक क्वेश्चन पेपर में आया था दैट हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ पिरामिड. तो इस पिरामिड के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, मतलब कितने कॉर्नर्स हैं. तो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है 4 और एक कॉर्नर टॉप पे है. तो बेटा इस पिरामिड के आपके पास कितने वर्टिसेस हैं. इस पिरामिड के टोटल वर्टिसेस हैं 5. ठीक है. ओके. सर अब देखें जी, ऐसे भी तो किस तरह करेंगे? बताता हूँ. The diagram shows a pyramid with a square base. ये कहता है it's a square. Although E, B, C, D, it looks like a rectangle. Agree or not? कि नजर आ रहा है कि it's a rectangle. मुझे तो rectangle लग रहा है, square नहीं लग रहा. Agree or not? लेकिन जब यहाँ पे लिखा है it's a square base, so the debate is over. The diagonal CE and BD they intersect at M. Okay, that is the point of intersection. Okay. Calculate the volume of the pyramid. तो volume of the pyramid का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया 1/3 AH. A का मतलब है बेस एरिया. ठीक है. एंड हाइट ऑफ द pyramid इज ऑल्सो गिवन, सो दैट इज वेरी इजी. हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल डाल देंगे. बेस एरिया इज अ स्क्वायर and the formula for the area of a square is length multiplied by length or L square, and the height of the pyramid is 9. So V is equals to 1/3 12 multiplied by 12 multiplied by 9 divided by 3. That is the answer. 432 centimeter cube is the capacity. It is the capacity of this pyramid. Anyone, any problem? Anyone, any problem? Anyone, any problem? All right. Calculate the total surface area of the pyramid. बेटा आपके पास pyramid के 5 faces हैं. So first of all, base, left, right, front, back. Okay. We have 5 areas, so I can write here A1, A2, A3, A4, A5. Area of the base is already there, which is 12 multiplied by 12, which is 144 centimeter square. Okay, now look at the pyramid very carefully. Beta, I can see that very well, Hamad, that this is the front triangle. Yes or no? Yes, sir. I need to find out that what is my FB and FE. I know that they all are same in length. Yes or no? Any problem? In order to find out this one, let me find out first of all one of the diagonal, because that diagonal is needed in order to find this blue one. Agree? So first of all, I will extract this triangle EB and see here. I will name the triangle in order to cancel out any confusion. Beta, mera beta, I told you many a times that this is 12 centimeters, this is 12 centimeter. So this is Pythagoras theorem. So the answer would be square root 12 square plus 12 square. So square root 12 square, 16.97. 12 square, एक मिनट मैं इधर देखना चाह रहा हूँ, plus 12 square. So the answer is 12 square root 2. So the answer is 16.97. I will take 12 square root 2 in order to avoid any confusion. So that is 12 square root 2. Now I'm going to divide it by 2. Divide by 2. So that is 6 square root 2 is this one and 6 square root 2 is this one. 6 square root 2.
So this one is also 6 square root 2 and this piece is also 6 square root 2. Let me find out FB by taking this triangle out. So Hamad, Mera beta, I can take this triangle. You can see that which is inside. So can I take this triangle outside for a while in order to get this FB? So let me draw this triangle first of all here and let me name it correctly. Top is F, the perpendicular is hitting at M and that is my B. So this is 6 square root 2 and this is 9. Let's find out this. So this is also hypotenuse square is equals to 9 square plus 6 square root 2 whole square. So square root 9 square, it's a Pythagoras theorem, 9 square plus bracket 6 square root 2 bracket close with a square. So the answer is, there's a problem what I did. सर जी आपने वो सर स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दी स्क्वायर रूट डाले सर एक मिनट क्या मैंने किया ऐसा? आपने वो स्क्वायर 2 का स्क्वायर दिया सर उसके ऊपर पे आपने स्क्वायर रूट डाला सर जी मेरे ख्याल से वो गलती है हाँ यस दैट्स द मिस्टेक. वो एक्सटेंशन हो गया है. ओके अब मुझे ब्रैकेट का बट एक मिनट डिलीट इधर करके नाउ ब्रैकेट हाँ अब नाउ इट्स फाइन. ओके इक्वल्स it's a 3 square root 17. So 3 square root 17, let me punch. 12.4 is the answer. 12.4 is the answer for this one. 12.4. That is also 12.4. This is also 12.4, 12.4 each. Okay. Now we know that the formula is area of the triangle is equals to 1 by 2 times base into height. Agree? Agree or not? And this is not a right angle triangle, it's not a right angle triangle. You can see that the answer question is for 5 marks. I have to find out one area and I will multiply by 5 because all the areas are same. So that is the reason the working is a bit lengthy. So let's find out the area of the triangle using I need one angle. So that is the reason I need what? I need cosine rule to find out the angle. So what I'm going to do is, everyone please pay attention. I'm going to erase this thing now. So I need an angle here to find out the area. But I know that there these 5 triangles, left, right, front, back, they all are same. So I need an angle. So I have to extract one of the triangle, which is FEB, FEP. This is 12.4, this is 12.4, and the lower part is 12 centimeter. I'm interested to find out this angle. So I'm multiplying cosine rule. So cosine rule is 12 square is equals to 12.4 square plus 12.4 square minus 2 into 12.4 into 12.4 into cos of x. I need this x. So subject making 12 square minus 12.4 square minus 12.4 square divided by minus 2 with the bracket 12.4, 12.4, and that is equals to cos x. Okay, left hand side calculator needed. 12 square minus 12.4 square minus 12.4 minus 12.4 square divided by minus 2 bracket 12.4 bracket close bracket 12.4. Okay, that's the answer. Now shift cos inverse answer. So the answer is 57.9 degrees. So x is equals to 57.9 degrees. So area is equals to 1 by 2 product of two sides, 12.4 multiplied by 12.4 multiplied by sine of 57.9. So sine of, so the answer would be 1 divided by 2 multiplied by 12.4 multiplied by 12.4 multiplied by sine of 57.9 bracket close. So the area of one triangle is 65.1. So the total area would be base 144 plus there are 4 triangles. So 4 multiplied by 65.1. So that would be my final answer. Answer multiplied by 4 plus 144. So the answer is 404.5. 404.5.
So till three significant figures, so I have to add 1 to this, that would be 405 is the final answer. G, understood everybody? The question was not tricky. G, सर मेरी 4 ट्राइंगल्स होंगे इसके अंदर या 5? बेटा 4 ट्राइंगल्स होंगे यार, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे है। जमीन पे तो स्क्वायर है। गॉट इट? Okay, a cone and a hemisphere. This question was in the exam 058042 February March 2024 case. So the diagram shows a toy made from a cone and a hemisphere. The base of the cone and the radius of the cone hemisphere are both r centimeter. We can say that. We can see that very clearly, bacha, that this r is common between a hemisphere and a cone. The slant height of the cone is 3. The total surface area of the toy is 304. Calculate the value of r. So beta total surface area is what? Curved surface area of hemi plus curved surface area of cone, that is 304 pi. So beta we know that 304 centimeter square is equal to curved surface area of hemisphere, which is 2 pi r square, plus curved surface area of cone is pi r l. So beta we need to plot the values correctly. So let's check. Let's check. So 304 is equals to 2 pi. Radius is r square, pi r. R of cone is r and length of cone is 3r. So 304 is equals to 2 pi r square plus 3 pi r square. So that would be 2 pi r square plus 3 pi r square, 5 pi r square. Yes or no? 5 pi r square divided by 5 pi on both sides. So r square is equals to 304 divided by 5, shift and pi. So the answer is 19.35. So let's take a square root because I तो need जी r. आपने 5 पाई को दोनों साइड पर कैसे डिवाइड किया सर? उसके साथ तो आर स्क्वायर भी है ना? तो मैंने 5 पाई, एक नंबर है, 5 पाई इज अ नंबर, r स्क्वायर आपका वेरिएबल है ना। ओ ओके, ठीक है सर। सो स्क्वायर रूट आंसर कर देंगे अभी। स्क्वायर रूट आंसर इक्वल्स 4.399, r इज इक्वल्स टू 4.399। एग्जामिनर ने कहा था कि थ्री सिग्निफिकेंट पेपर में आंसर देना है, तो दैट इज थर्ड सिग्निफिकेंट, आफ्टर 9 इट्स 9, तो 1 ऐड करूंगा तो 4.40 इज द आंसर। जी, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? So remember जी that सर। in mensuration paper, when you see a shape, write the formulas for that shape. You can see that curved surface area of the cone was given in the exam, and the curved surface area of the sphere was given. So that was the trick, that you have to divide 4 pi r square divided by 2. So that's how you get 2 pi r square. Got it? Okay, this question is from O levels exam 402422 May June 23. So this will be bilkul easy for O level students, but IGCSE students, you have this question will be a new for you. It's a rectangle. Rectangle, the length of the rectangle is twice its width. So twice its width. So I told you that algebra is the language of maths. So beta, this is the practical application of algebra. Okay, so it means that they said, for example, the width, for example, if this is x, so that would be double of x. It means twice. The rectangle has a perimeter 20.4, so that would be 2x as well, and that would be x. Perimeter, better we know that sum of all sides. So perimeter is equals to L plus L, length plus length, plus width plus width. Let's replace the values. Perimeter is 20.4, length is 2x, length is 2x, width is x, and that width is x. So the total is 6, x is equals to 20.4. So divided by 6 on both sides, 6 cancel. So x would be the length, width. So that would be 20.4 divided by 6. So the answer is 3.4. So length would be the double. Length would be the double. So 2 times 3.4 would be 6.8. So length of the rectangle would be 6.4 and width would be 3.4. Understood? 6.8, sorry.
अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? समझ आइए मेरा बच्चा कि नहीं? समझ आइए बेटा? अंडरस्टूड? जी सर। ओके, रेक्टेंगल एस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू रेक्टेंगल आर। तो एक रेक्टेंगल एस मैं आपके सामने बना देता हूँ। दिस इज रेक्टेंगल एस। रेक्टेंगल एस हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30.6। अच्छा, इसका जो पेरीमीटर है ना, ये 30.6 है। कितना है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 30.6। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एस फाइंड आउट करनी है, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो ये रेशो लेंगे आप लोग। क्या लेंगे? रेशो। You can see that here 6.8 is equals to 20.4 was the perimeter. So x is equals to 30.6. Let's check. That is the ratio method. So cross multiplication. So 6.8 times 30.6 is equals to 20.4x divided by 20.4 on both sides. Cancel. So 6.8 multiplied by 10.2. 30.6, 10.2 ही आ रहा है, divided by 20.4. So the answer is 10.2 is the length of this similar figure. So beta, similarity में we know that when we know the concept that similarity में we have ratio of the corresponding sides, they are same. Got it? Okay, sector. A piece of card is a sector of the circle with a sector angle 75 and radius 8. Final expression in terms of pi for the arc length. हमने भी पढ़ा हुआ है. So that arc length is equals to theta by 360 multiplied by 2 pi r and the radius is 8. So whatever the answer is, that would be the final answer. Can anyone tell me what is the answer? 75 multiplied by 16 pi divided by 360. 10 by 3 pi. Is this the final answer? 10 by 3 pi. Yes, sir. जी सर। Okay, volume of the cone. Now they say that the piece of card forms the curved surface area of the cone. मेरा बेटा अभी मैंने आपको explain किया है. If I fold this sector, if I fold this sector from this point to this point, this will make this thing. Any problem, anyone? Any problem, anyone? बेटा किसी को कोई No, problem sir. है? So नो circumference of the सर। circle is 2 pi r and arc length is 10 by 3 pi. So beta I can cancel pi pi. Let's check. Oh sorry, मैंने r काट दिया यहाँ पे. I can cancel pi pi. So r2 divide हो जाएगा. R is equals to 10 by 2 3 is 6. So r is equals to 10 by 6 is how much? 5 by 2 2.5. 10.67. क्या हो गया बेटा? 10.6. 10 divided by 6. Yes, sir. 5 by 3 1.67. हाँ जी, 1.67 is the radius of the cone. So that is 1.67 is the radius of the cone. Volume of the water of cone, so I need a height of the cone. Let's use Pythagoras theorem. So height of the cone is unknown. So hypotenuse square is equals to 1.67 square plus 8 square. So ये minus होगा. 8 square minus 1.67 square is equals to h with a square root. So square root 7.82. 7.82 is the height. Thank you, Hamad. So volume of the cone is equals to 1 by 3 pi r cube. The formula is given in the question, pi r square. So 1.67 whole square. Height of the question is cone is 7.82. What is the volume beta total? G 22.8. 22.8 centimeter, because the question was in centimeters. So that would be centimeter cube. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए कैलकुलेटर आप लोग इस्तेमाल करें. मैं जरा आप लोगों से बातचीत भी करता रहूंगा क्लास के दौरान. कैलकुलेटर मैंने बंद कर लिया. ओके. सो बेटा जो बच्चा भी क्लास ले रहा है ना, वो मेरे पे कोई एहसान ना करे. ठीक है? क्लास लेनी है तो ले, वरना बिल्कुल ना ले. ठीक है? आई डैम केयर. A cuboid has a dimension x centimeter, 5 minus x and 15. Show that the expression for the volume. Beta, we know that volume of the cuboid is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. So volume length is 15, largest one length होती है.
मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो हमारे पास है 5 माइनस एक्स, और हाइट भी है एक्स। तो सब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5x माइनस एक्स स्क्वायर, अब 15 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 टाइम्स 5 इज 75 एक्स माइनस 15 एक्स स्क्वायर शोन, यही वो कह रहा था कि शो करो। नाउ कंप्लीट द टेबल। सो बेटा कंप्लीट द टेबल, every table is complete, put x is equals to 2.5, so v is equals to 75 bracket 2.5 bracket 15 minus 15 bracket 2.5 स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आता है, v कितना आ रहा है जरा मुझे बता दे एक बच्चा, एनीवन? अलीना गिलानी बेटा, दिस इज फ्रॉम ओ लेवल्स एग्जाम। अच्छा, सर ये दिस इज 2.5 के बाद -15 है सर। 83.7। ये ऊपर लिखा है ना एक्सप्रेशन में ना बेटा, हाँ माइनस है ना। ओके ओके ओके, सॉरी ये बेटा, देखो दो टाइम। हमाद, ये देख रहे हो, ये इसी में मैं जी सर। 2.5 पुट करूंगा ना। जी सर, वो गलती है, सॉरी सर, दिखा नहीं था सर जी ब्रो। कोई बात नहीं जी, क्या आया था आंसर? 93.75। 93.75 आया था। 1 मार्क एक्सप्रेशन शो करना, 1 मार्क टेबल शो करना। तो ओके, नाउ कंप्लीट करो 160। ये ग्राफ ऑफ फंक्शन का है, तो देख लें बेटा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि वन ग्राफ ऑफ फंक्शन कराएं। 160 1.5 इज 78.75 7, ये होगा 78.75, बिल्कुल थोड़ा सा 80 से नीचे। ओके, फिर आ रहा है 2 पे 90, 2 पे 90, तो 2 पे 90 कुछ ये वाला पॉइंट होगा। ओके, 2.5 इज 93.75, 90 92 93.75, 3 पे अगेन वी हैव 90, so 3 is 90। ओके, 3.5 is what, 3.5 is 28.75, 78.75 सॉरी, so that is same, हमने पहले भी लगाया हुआ है। And 4 is 60, 4 is 60, but you can see that it's a quadratic graph with the minus x square, so that is the reason it will be a flipped u, तो ये उल्टा u होता है। So you can check, मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ, तो 1 2 2 3 4 पूरा प्रॉपर टर्न करना, अच्छा u बनाना होता है, ठीक है, डन। मेरा बेटा ये ब्लू लाइन क्या शो करती है, अमार, अमार बिलंद, आई एम टॉकिंग टू यू। This blue line is showing the volume of cuboid. Is this clear? Yes, sir. This blue line is showing the volume of the cuboid at different values of x. Got it? And what x is? X is the length. You can see that in the diagram. Can you see that? Height. When the height is 1, the y value would be 60, means that the volume would be 60. When the height is 2, means x is 2, volume would be 90. When the height is 3, the volume remains again 90. Yes or no? Then the volume of the pyramid, next page, we are done with this one. Volume of the pyramid is equals to this formula is given. Okay, now the diagram shows a pyramid with a square base. It means that that part is also 9. The pyramid height and volume y centimeters show that the equation of the volume of the pyramid is this one. But the volume of the pyramid is 1/3 into the base area times height. But a base is a square, so 9 times 9 multiplied by height is x. 9 nines are 81. 81 divided by 3 is 27x, and that is shown. Understood, everybody? Now they say that better by drawing a suitable line on the grid on page 2, find the height of the pyramid when the pyramid and the cuboid have the same volume. Okay, so it means that volume of cuboid, it must be same with the volume of pyramid, right, Hamad? Yes, sir. But a volume of the cuboid was represented by y, volume of the pyramid was represented by y, but volume of the in which y was 15x minus sorry 75x minus 15x square, 75x minus 15x square, and the volume of a pyramid is 27x. So let's find out x first. So let me take everything to the right side. So 0 is equals to 15x square plus 27x minus 75x. 0 is equals to 15x square, plus minus is minus. 75 minus 27 is how much? Anyone? 48. Okay, that would be 48x. Can I take a 3 common? 3x is common.
So 5x square, sorry, 5x, x is also common, minus 3 times 16 is 48. So beta, can I say that in algebra that 3x is equals to 0 and 5x minus 16 is equals to 0? So x is equals to 0, length cannot be negative, so that is ignored. 5x is equals to 16 by 5. X is equals to 16 by 5 divided by 5. Yes or no? Sorry, apologies. That is a bit mistake here. Okay. So x is equals to 16 by 5. But 16 by 5 is equals to what? 3.2. So 3.2 is the value of x. So by drawing a suitable line, so x is equals to 3.2. X is equals to 3.2 is the line here. X is equals to 3.2. So 3.2 is this line. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes or no? So x is जी equals to सर जी 3.2 is the height of the, by drawing a suitable line on the grid, find the height of the pyramid when the pyramid and the cuboid they have the same volumes. So we found the y is equals to y. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन को डेवलप करना था. सो हमें एक ऐसी लाइन को डेवलप करने के लिए y इज इक्वल्स टू y हमने पुट किया, हमारे पास एक लाइन आ गई विच इज x इज इक्वल्स टू 3.2. हमने x इज इक्वल्स टू 3.2 लाइट लगा दिया वहां पे. नाउ यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली that at this position the volumes would be the same one. Yes or no? So we wanted to find out the height of the pyramid. So that was x, and x value was 3.2 here. Understood everybody or not? Any problem? जी सर नो प्रॉब्लम सर Any problem? Anyone else? Ilam, Isha, Marukh? No, sir. Okay, चलें जी, proceed कर रहा हूँ. I'm proceeding. Okay, the diagram shows a small rectangle inside a large rectangle, and the width of the large rectangle is x. The height of the large rectangle is x. So this is 3, this is 3, this is 3, this is 3. 3 plus 3 is 6. Yes or no? So beta, can जी I say सर that from this point to this point it is x minus 6? Can I say that? जी सर बिल्कुल Okay ji. Now they say that the length of the large rectangle is 4 times its height. So can I say that this total is 4x? Agree? जी सर So inner this length of the small rectangle would be 4x minus 6. Agree? सर ये थोड़ा रिपीट करें सर वो 4x है सर ये नीचे वाला अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ, देखें जी, सब देख लें, गौर कर लें बेटा. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन. फिर बाद में कोई गिला ना करे कि सर ये समझ नहीं आ रही. बेटा कहता है द हाइट ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज एक्स. ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये एक्स है. एग्री एवरीबॉडी? नाउ दे से दैट, हमें नजर आ रहा है कि दिस इज 3 एंड दैट इज 3. 3 प्लस 3 6 होता है. एग्री और नॉट? इट मींस दैट जी सर जी it means that the height or the width of the small rectangle is x minus 6. Understood? यस सर Second line, the length of the large rectangle is 4 times its height. Okay. So the length of the large rectangle is 4 times its height means it is 4x. So automatically this is 3, this is 3, 3 plus 3 is 6. So I can say that the length of the small rectangle would be 4x minus 6. Now they say that the width of the shaded border is 3. The area of the small rectangle is 80 centimeters square. Area of the small is 80. So area of the small is Hamad 80, जी right? सर And area of the small would be equals to x minus 6 multiplied by 4x minus 6. Do you agree with me or not? जी Length सर जी multiplied by बिल्कुल breadth. So now हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये इक्वेशन बनानी है. अब्दुल्ला चौधरी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ये देखें, ये गलती आप करते थे. तूने मेरा बहुत दिमाग खाया है. This multiply by this, फिर this multiply by this. So 4x square minus 6x. अब minus 6 की बारी है. Minus 6 into 4 minus 24x minus minus plus 6 6 are 36 is equals to 80. 4x square minus 30x
plus 36 negative 80 is equals to 0. 4x square minus 30x minus 44 is equals to 0. बेटा टेबल 2 कॉमन ले सकता हूँ, डू यू एग्री और नॉट? जी सर जी बिल्कुल। तो अंदर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2 करो तो अब्दुल्ला चौधरी अगर नजर आ रहा है तुम्हें कि नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 आ गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे शोन, हमने शो करना था। ओके, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। आओ मिड टर्म ब्रेक से करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 44। फैक्टर्स ऑफ 44 आर 144, 222, 3 में नहीं आता, 4 में आता है। 4 टाइम्स 11, यस 4 प्लस 11 इज 15, मिल गया फैक्टर, यस और नो? जी सर। So 2x square minus 4x minus 11x minus 22 is equals to 0. Minus 4 minus 11 is plus 15. That's fine. 2x is common. So x minus 2 is inside. Minus 11 is common. So x minus 2, no, plus 11 कॉमन आ रहा है यार। अगर माइनस 11 कॉमन लूंगा तो ये अंदर प्लस 2 हो जाएगा, राइट हमाद? जी सर जी सही कह रहे हैं सर आप। तो ये ब्रैकेट सेम नहीं आएगी, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते इससे, ठीक है? ब्रैकेट सेम नहीं आती। तो लेट्स प्रोसीड विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की वैल्यू माइनस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 15 होल स्क्वायर minus 4, a is 2 and c is negative 22 whole divided by 2 and the value of a is 2। कैलकुलेटर पे बेटा मोड 5 3 दबाएं और बताएं व्हाट इज x1 व्हाट इज x2। यस बेटा बता दो जाओ। मोड 5 और 3। सर एक एक्स 8.7 है। 8.7 बेटा 2 dp बताना है। 8.76 ओके दूसरा। 8.76 -1.26 -1.2। अच्छा अब अगर बेटा अगर याद हो आपको हसन नासिर कि यहाँ पे x जो थी ये लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा लेकिन मैं आंसर दोनों लिखूंगा, ठीक है? जी सर। ठीक है 3। calculate the shaded area, तो we will use the positive answer only, okay? Positive answer। so large minus small, तो large की लेंथ है x और वो है 4x, x है 8.6 8.76 और ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8.76। ओके स्मॉल की जो लेंथ है वो है x माइनस 6। सो बेटा x माइनस 6 का मतलब है 8.76 माइनस 6 और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4x माइनस 6। ये होगी बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई 8.76 माइनस 6। गॉट इट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आता है। 8.76 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8.76 कितना आता है लेंथ इनटू ब्रेथ? व्हाट इज द एरिया, एनीवन? सर आपने 8.76 दो बार मल्टीप्लाई क्योंकि कहाँ पे? ए इक्वल्स टू। और यार ये देखो ना, ये 4x थी ना, सर तो ये x इसने की दो आधा बार था सर। मल्टीप्लाई, अच्छा सही है समझ आ गई। सर हाँ थ्री ना, जीरो ये सिक्स पॉइंट नाइन फाइव 306.95। ओके एरिया ऑफ स्मॉल का बताओ, वो लिखा हुआ है, सारों को मल्टीप्लाई करना है। 4 ब्रैकेट 8.76 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 8.76 माइनस 6 के साथ। क्या आ रहा है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। क्या आ रहा है बेटा ये बता दो। अच्छा आप लोग इसको इधर, आप लोग इसको यहाँ पे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ये मुझे बता दो ये कितनी लेंथ आ रही है और ये कितनी आ रही है। ये तो 2.76 आ जाएगा, एग्री? और ये कितना आएगा? सर ये तो 11.04। 11.04। तो 11.04 मल्टीप्लाई बाय 2.76 क्या आता है?
जी 30.4, 30.5। बेटा एक मुझे बात बताओ, ये 4 × 8 -8.76 -6 11.04 नहीं आता? सर जी ये थोड़ा गलत हो गया सर जी, मैं दोबारा करता हूँ, सही है? आप करें जरा, मुझे बताएं। नहीं ऐसा करता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लो। सर 29.04 है। हाँ 28 = 29.04, और ये कितना है? 2.76। और 29.04 मल्टीप्लाई बाय 2.76, अब बताओ। 80.15। 80.15, तो शेडेड होगा लार्ज माइनस स्मॉल। लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज इज 306.95 minus 80.15, so the answer is 298.8। 298. तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 299 बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है बेटा सबको कि नहीं? अच्छा, हमसे एक गलती हो गई है, आपको पता है? वो एरिया ऑफ द स्मॉल तो क्वेश्चन में गिवन था ना, हम 80 ले सकते थे ना, हमने खुद इतनी कैलकुलेशन करके 80.15 निकाला। समझ आइए? सर जी तो हमें तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ऊपर, इसलिए हमारा हाँ ख्याल वो, नहीं गया जी। यस, हम पार्ट सी में थे ना, तो हमने ऊपर देखा ही नहीं कि हमें स्मॉल गिवन था क्वेश्चन में। हम बस लार्ज निकाल के लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर लेते। तभी ये एक्चुअली मैंने अभी ये गौर किया ना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये वाला हिस्सा तो क्वेश्चन में गिवन था, हमने इतनी एफर्ट करके इसको निकाला, ठीक है? सर जी आंसर थोड़ा गलत नहीं आ रहा सर, ये भी आंसर पर थोड़ा सर जी ये सर ये आंसर गलत बताया इसने। आंसर गलत नहीं आ रहा सर जी। ये बेटा आप जरा मुझे बताएं ना, फिर इसको ठीक करते हैं ना सर जी जरा, मैं कि क्या जरा अभी करता हूँ आंसर सर जी। 226.8 आ रहा है। ये वाला आंसर गलत आया ना, ये वाला 306 वाला? नहीं सर जी ये सही है, ये ऊपर ये नीचे गलत आया है। नीचे गलत आया, मतलब माइनस करके अच्छा 306.95 सर माइनस जी ये टू 80.15 हाँ सही बात 26.8 है आ बेटा, ये 80 माइनस करना है ना, कितना आया? 26.8। 200.8, तो ये 227 आंसर होगा। ये हमाद बेटा, बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस, ओके? ला, मैंने तुम्हें कैलकुलेटर करने के लिए दिया हुआ है, ओके? 2 मार्क्स। चलो भाई देख लो, ये मेंसुरेशन के बहुत सारे केसेस मैंने आपके सामने कर दिए हैं सॉल्व, ठीक है? ओके। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ मैंने छोड़ा था, वो इसलिए छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वो केसेस हैं जो कि मैंने ऊपर लिख दिए हैं, कि दैट दीज केसेस फ्रॉम मेंसुरेशन रीसेंट एग्जाम केसेस 2023 एंड फरवरी मार्च 2024। अब ऐसा है कि एक क्वेश्चन मुझे हमाद ने बोला कि सर आप जरा ये सॉल्व करें, तो मैं वो क्वेश्चन, हमाद आपका ये क्वेश्चन जो है मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? हमाद, जी सर जी जी। मेरा बेटा, आपने ये वाला क्वेश्चन मुझे कहा है कि सर ये जरा सॉल्व करें, तो मैं भी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी हो सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमाद ने मुझे कहा कि सर ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप जरा देख लें कि इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा, ये क्यूबॉइड का नेट है बेटा, क्यूबॉइड का नेट है। अब नेट, जो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी नेट पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था, क्यूबॉइड के अंदर अगर किसी को नेट वेट समझ नहीं आती, तो क्यूबॉइड आप लोग मेंसुरेशन का लेक्चर देख लो पहले। आपको पता है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये इस हिस्से के सेम है, ये वाला इसके सेम है, और ये वाला इसके सेम है। जी समझ आइए सबको? जी सर। अच्छा, एग्जामिनर कहते हैं द डायग्राम शो द नेट ऑफ द क्यूबॉइड, द रेशियो ऑफ विद रेशियो लेंथ इज 1। तो इसका मतलब है कि बेटा ये रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W/L is equals to 1/2। एग्री और नॉट? जी सर बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि 2W is equals to लेंथ। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? सर ये आपने यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सर। तो और क्या किया है बेटा? 2W मतलब लेंथ डबल है ना विथ के। जी एग्री? सर। एग्री? अब देखो बेटा, जी ये सर। देखो जरा यहाँ पे, ये हाइट है, एग्री? दिस इज H, ठीक है? अंडरस्टूड? बेटा ये W है, ये क्या है बेटा? ये W है, डब्ल्यू। अंडरस्टूड? तो और ये फिर हाइट है, एग्री? ओ यस सर जी।
तो मैं कह सकता हूँ बेटा 2h प्लस w इज इक्वल टू 20.1। कैन आई से दिस? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करो, दूसरे पे मैं ग्रीन लाइन ले इस्तेमाल करता हूँ ताकि समझ आ जाए। मेरा बेटा देखो, ये लेंथ है, एग्री? जी एग्री? सर। ये वाली आपकी हाइट होगी। ये देखो, यहाँ से इसको इसके साथ मैप करना है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है ना, एग्री? यस सर। यस सर। ये फिर लेंथ हो गया, ठीक है, और ये आपका फिर हाइट हो गया। तो कह सकता हूँ कि 2 लेंथ प्लस 2h इज इक्वल्स टू 37.8। 2 लेंथ प्लस 2h इज इक्वल्स टू 37.8। कह सकता हूँ हमाद के नहीं? सर कह सकते हैं सर। अच्छा देखें जरा, अब मैं पहली एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2h प्लस w इज इक्वल्स टू 20.1। दूसरी इक्वेशन आ गई है 2l प्लस 2h इज इक्वल्स टू 37.8। बेटा क्वेश्चन में उन्होंने हमें खुद ही कह दिया था कि आपकी ये जो लेंथ है ये डबल ऑफ विड्थ है। यस और नो? यस और नो जी सर जी। हमाद? तो मेरा बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो एल है ना, मैंने यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है, इस एल को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2w के साथ। किसके साथ? 2W। देखो रिप्लेस कर दिया मैंने, समझ आ गई है? जी सो सर। अब मैं इस इक्वेशन को सेट कर रहा हूँ, 2h प्लस w इज इक्वल टू 20.1, और टू टू जार 4w आता, तो 4w w के नीचे, और यहाँ पे लिख देंगे 2h इज इक्वल टू 37.8। ये बेटा दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं, 1 और 2। अच्छा, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, तो 2h सेम है, तो मैं माइनस करता हूँ। तो जब मैं माइनस करूंगा तो इन नीचे इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है? होंगे ना साइन चेंज बेटा? सर तो जब इनके में साइन चेंज हो जाएंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, w इज इक्वल 20.1। अभी हो गया सर, ये भी तो आसान ये आ हो गया जाएगा सर। -2h -4w और -37.8, तो ये कट गया। तो ये आएगा बेटा -3w इज इक्वल टू, प्लस माइनस इज माइनस, ये क्या आता है बेटा? 20.1 -37.8, तो आंसर माइनस में आएगा। कितना आ रहा है? -17.7। 17.7। नाउ डिवाइड बाय -3 करो ऑन बोथ साइड्स, मुझे बताओ विथ कितनी आ रही है? 5.9। 5.9 इज द विथ। 5.9। 5.9 इज द विथ, ठीक है। 5.9 को डबल करें, लेंथ आ जाएगी। डबल करें, 11.8। 11.8। 11.8। अब हाइट निकालनी है, हाइट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, इसमें से किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में भी आप w डाल दो। सो जी टू सर सर जी, एच 17 जो बनी इसमें से बस एक में भी डाल लेते हैं ना सर, ये बस हो गया फिर। बस हो जाएगा। तो अब समझ आ गई कैसे हुआ है? 5.9 वहां पे जाके माइनस करो, 20.1 माइनस 5.9, 2h इज इक्वल टू 20.1 माइनस 5.9 इज हाउ मच? 14.2। 14। 14.2। 2। अब इसको डिवाइड करो, 7.1 आ रही है मेरे ख्याल से। 5 नंबर का ही सवाल था जी। जी ठीक है मेरा सर। बेटा, ओके सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। चलें बेटा, इंशाल्लाह ताला कल हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है? रिवाइज करके आइएगा, रिवीजन की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि मैं पास पेपर कराऊंगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा। रिवाइज कोऑर्डिनेट जी ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस फ्रॉम लेक्चर। मैं आपको लेक्चर्स की वीडियो भेज दूंगा। कल रात को क्लास सेम टाइम पर होगी, ठीक है? तो कोशिश करें कि क्लास से पहले आपका लेक्चर रिवाइज हुआ हो, ताकि आपको पास पेपर क्वेश्चंस की समझ आए, ठीक है? और फिर आपका जो मंडे है बेटा, मंडे से टॉपिकल से ज्यादा हम लोग ईयरली पास पेपर्स करेंगे, क्योंकि ओ लेवल्स वालों का पेपर है 30 को। तो एक दिन हम पेपर 2 करेंगे और एक दिन हम पेपर 1 करेंगे। ओ लेवल्स का पेपर 1 करेंगे और साथ में आईजीसीएसई का पेपर 2 करा करेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो, ठीक है अपना सर। अपना ख्याल अल्लाह रखें, अल्लाह हाफिज सर हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।